Okay, so here is question number 3. In the same way हम arithmetic mean find करेंगे. A and nth of arithmetic mean is here, as you can see from questions 1, 2, 3, 4 and so on. So here is A and is n. And what about the GP? 1 plus x square and so on. So we have A n value x power n minus 1. A यहाँ पे 1 है, ठीक है, और r की वैल्यू क्या है x and n minus 1 as so A n. Okay, let's just find here A n plus 1 x n minus x n plus 1 minus 1. So A n plus 1 equals to x n. Okay. Okay, this is actually 1 minus r s n, 1 into 1, a into a. Okay, and here is d into a1. So we put d, यहाँ से देख लें d is 1 and this capital A1. Here is the capital A1 which is equals to 1. And we write here x because x is r. R is x, 1 minus x n by 1 minus x, and this minus sign minus n and into xn. Okay, let's just simplify it. We combine this term with this. इसको इन दोनों को पहले को इकट्ठा लिख लिया है और इस टर्म्स को बाद में लिख दिया, ठीक है. और सिंपली एस एन यहाँ से इस टर्म को यहाँ नीचे दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है. ये देखें 1 माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस एक्स है तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आपके पास एन आता है, ठीक है. यहाँ ऊपर ये जो एन था ये इस जगह पे एन आएगा. ओके ओके, सो हियर इज योर आंसर. एस एन इक्वल्स टू 1 माइनस एन एक्स एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स. यहाँ तक भी सॉल्व करे तो एनफ है, ये आपका आंसर आ गया. ओके, कम टू पार्ट 4. ये सीरीज है आपके पास, ठीक है. इसमें आपने अरिथमेटिक पहले सेलेक्ट कर ली एक साइड पे 1, 3, 5, 7. दिस इज अरिथमेटिक बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम which is 2. What is a1? It's 1. So we get here an. And what about the gp? This first term is here 1, as 1 multiply 1, and 1 divided by 2 and 1 divided by 4. We have a common difference. R is equal to, sorry, common ratio 1 by 2. So here we write here a value and value of r. So we get a n here. So what about the a n plus 1? Just simply write down n plus 1 instead of n. So we get here a n plus 1 is equal to 1 by 2 power n. Okay, let's just put the values in this formula. 1 minus r s n, same a, small a, capital A. This is r into 1 minus r की पावर n, 1 minus r, ठीक है. फॉर्मूला सामने रखेंगे, सब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. Here is d, here is your a, capital A, minus. This is your nth term of arithmetic and this is your nth plus 1th of geometric. So just simply combine them. Okay, let's just solve them. Okay, from here we're taking this LCM. So we get the values like this. Here we get the values like this, and we just simplify what we're doing here is that I write these terms here. Now let's just simplify it. Let these terms in the division, we will invert these terms. We will get 2 minus 1, like 2 minus 1 is 1. So divide में जब कोई भी चीज़ होती है, जब 1 by 2 है तो it will become 2 by 1. So here is 1 by 2, 1 minus 1 by 2n. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. सिंपली क्या किया है, डिवीजन वाली को, ये डिवीजन डिवाइड की वैल्यू को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ये हम उसी तरह लिख रहे हैं. ओके, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. 2n minus 1 and 1 by 2n. हमने जो पूरा n आ रहा था उस पर हम 2n पे जस्ट सिंपली कन्वर्ट करें. ओके, लेट्स जस्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन. Taking LCM here, 1 plus 2n minus 1 divided by 2n, 2, and 2n minus 1 divided by 2 power n.
Okay, now 1 by 2 divide here, 2 is dividing here, in so on the other side it will goes to multiply. So here is a multiplication to इसके साथ डिवाइड. अब देखें यहाँ पे जस्ट थ्री टर्म्स है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ये 1 और ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. ठीक है, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या किया है, 2 को 1 के साथ किया, 2 को इस वाली टर्म के साथ हमने इसको नहीं चढ़ा, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इस 2 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म थी इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई करके यूँ लिख दिया. अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? ओके, यहाँ पे देखिए पावर में डिफरेंस है, ये n है, 2n माइनस 1. ठीक है, ये यहाँ पे ठीक कर ले, 2n माइनस 1, दिस इज 2n माइनस 1. ओके, सो हेयर इज 1, इसमें पावर में 2 की पावर 1 थी, तो यहाँ पे नीचे जाके क्या हो जाएगा, -1. तो हमने ये चीज़ लिख लिया. ओके, इसको करते हैं तो 2n डिवाइडेड बाई 2n. ठीक है, 2n और सिंपली 2n पे डिवाइड हुआ है. ये बात समझ में आ गई है? जब हमारे पास एलसीएम इस तरह लिखी हो चीज़ें, तो हम उसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं. लाइक इफ वी हैव 1 by 3, 1 minus 3 by 2, so we also write it 1 by 2 minus 3 by 2. in the same way यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. so we are left with here 1 minus 1 by 2n, and here is minus 2n minus 1 by 2 power n minus 1. so here is your final answer. इस फार्मूले से बहुत सिंपली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. Okay, now move to the part 5. So here's your part 5. So first we will rewrite this arithmetical and geometrical series, like how we can write them. Like we are doing this arithmetic series, we separate these terms, and geometric series we add plus here and minus sign. Minus sign is with this x. हर जगह पे अंदर माइनस साइन ज्योमेट्रिको सीरीज कैसी बनेगी, ऐसी. ठीक है, ये बात आपने ध्यान से चेक करना है, ज्योमेट्रिको सीरीज हमारी कैसे बन रही है. लाइक वी आर गोइंग टू हैंडल विद दिस अल्टरनेट सीरीज, लाइक जिसमें प्लस और माइनस साइंस आते हैं. ठीक है, ओके, फर्स्ट जस्ट लेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन from arithmetical series. It's very simple. Take a1 and d, and we get here our answer. Now come to the geometrical series. Okay, we have a, capital A is a1 and r is minus x. Okay, now we're going to find the an and also an plus 1, because in the final equation we are going to put the value of an plus 1. So let's just, here is your an. Okay, here is your an. Let's just find the value of an plus 1. So an plus 1 is simply just putting the values of, put the value of n plus 1 instead of n. So we get this n plus 1 value. Okay, let's just this is our formula. Formula आपको याद है, ये क्या है, 1 minus r. So here is your r. Okay, separately just write down this is your r minus x. ठीक है, बहुत खास ध्यान रखना. एस एन a into a1. What is a? A this a1, this capital a1. Okay, plus, अब ये देखें, ये r है, 1 minus r power n, 1 minus r d, this is your a1, minus nth term of ap and nth plus 1 term of gp. ओके, बहुत सिंप्लीफिकेशन इजी है. 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये एस एन हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ माइनस के साइंस हैं, इनको नहीं छेड़ेंगे हम, हमें नहीं ज़रूरत. उसके बाद यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म के साथ यहाँ पे कंबाइन करके लिख देंगे. जस्ट इस 1 माइनस 1 प्लस एक्स को आप यहाँ पे ले आएंगे, दोनों तरफ इसको सिंप्लीफाई करेंगे. बस यहाँ तक आपका आंसर है. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका सॉल्व हो जाता है. ओके, इन द सेम वे पार्ट 2 हमारा रह गया था, इसको भी हमने अरिथमेटिक सीरीज ये आपने निकाल ली. ठीक है, अरिथमेटिक से, एंड दिस इज और ज्योमेट्रिक. सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन और फॉर्म. ओके, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका पार्ट 2 था उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं. ठीक है, सो इसमें जस्ट रीअरेंजिंग है और इसमें कोई नहीं है, लास्ट पे आपका आंसर इजीली आ जाएगा. 1 माइनस एक्स को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है,
दिस इज एक्स एन, 1 माइनस एक्स एन पावर, ये आपका आंसर आ जाता है। सिंपली ये देखें 1 माइनस एक्स, ए की वैल्यू, a1 की वैल्यू, d और a की वैल्यू, nth ऑफ ap एंड nth प्लस 1 ऑफ gp। तो सिंपली इस लास्ट वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 1 माइनस एक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू, आप सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन सी दैट, इसको इसके नीचे लिख दें, इसको इसके नीचे लिख दें, डजंट मैटर, ये आपका आंसर आ गया।